So I think these are a total of 11 questions. Huh? These are a total of 11 questions. So 3 to 4 we are going to do together, and the rest are your assignment. Aja, the way this worksheet is organized, आपके जितने भी LOs हैं of your topic, I think so there are 15 LOs of the topic energy and respiration. All the LOs are covered in this worksheet. So हर LO को इस worksheet ने almost satisfy किया. Redox indicator का question नहीं है इसमें. वो usually paper 5 में test होता है. But otherwise बाकी सारे जितने भी LOs हैं, जो भी जो expected आप लोगों से concepts हैं, वो सारे के सारे I have integrated in this worksheet. The questions are from 2022 till 2024. And all your LOs are covered. मैं group पे once I'm done with the classes, I would send कि किस तरह से कौन सा question किस LO को test कर रहा है. अच्छा जी. So let's start with this question. I wanted to do this with you guys. So this is October-November 2022, paper 4-3, question number 3. The question starts with, the results of investigations carried out on mitochondria show how the structure of a mitochondrion is related to its role in aerobic respiration. Intact mitochondria, not damaged, were removed from cells. तो हमने cells से mitochondria को separate किया. किस तरह से mitochondria को separate किया? You guys would have studied centrifugation and cell differentiation in AS. So through that process, हमने centrifugation करके mitochondria को separate किया, isolate किया from cells. A technique was used to remove the outer mitochondrial membrane, leaving the inner membrane intact. So फिर हमारे पास mitochondria looks like this. So what we did was that the outer membrane was removed and only the inner membrane was left intact. The inner mitochondrial membrane was separated from the contents of the matrix so that both could be analyzed. So inner mitochondrial membrane को और matrix को भी हमने separate कर दिया so that हम दोनों को separately analyze कर सकें. The removal of the outer membranes of mitochondria involves placing the organelles in pure water. This results in the rupture bursting of the outer membrane. The inner mitochondrial membrane does not rupture and remains intact. Now, हमें क्या करना था? We had to remove the outer membrane. Now, how does a mitochondria look like? Now, this is your outer membrane and this is your inner membrane. हमारे पास बीच में क्या है? हमारे पास बीच में है inter membrane space. Now, हमारे पास what we did was we had to remove this outer membrane, and for that we introduced this mitochondria into pure water. And when we introduced this mitochondria into pure water, हमारे पास ये जो part है, that underwent an osmotic lysis. And due to this, हमारे पास जो outer membrane और intermembrane space है, वो हमारी remove हो गई, leaving us with the inner membrane and the matrix inside it. Suggest and explain why the inner membrane of a mitochondrion remains intact when the organelle is placed in pure water. Why is it that only the outer membrane is undergoing an osmotic lysis and not the inner membrane? Now, हमारे पास जो mitochondria की outer membrane होती है ना, that is permeable to a lot of ions. It is permeable to a lot of species. On the contrary, हमारे पास जो inner membrane है, it is less permeable in comparison to the outer membrane. So over here, you need to know that the outer membrane is more permeable than the inner membrane. Now, the outer membrane was undergoing an osmotic lysis, but the inner membrane was not undergoing an osmotic lysis. So, what does this suggest, or what idea can we draw from this? Is that water is what? Water is a polar molecule, right? So, water
can move across the outer membrane and cause an osmotic lysis. However, because the inner membrane is remaining unaffected in the presence of pure water, which has the highest water potential, it suggests that the inner membrane would be impermeable to water. Therefore, no water is entering across the inner membrane, and thus there is no osmotic lysis which is taking place. So, is this explanation clear to you all? Any questions, any ambiguities about this? Yes, Amaya, we started off with this question. Okay, I'll repeat. I'll go over it again. मैं फिर से explain करती हूँ. Now, what's happening in this question is that we are isolating a mitochondria. हम cell से mitochondria को isolate कर रहे हैं. We need to analyze the structure and the function of a mitochondria. ठीक है? एंड फॉर दैट आप लोगों ने टेक्निक आप लोगों को याद होगी, आप लोगों ने सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा होगा या सेल डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा इन एएस. उसमें हम क्या करते थे, हम बहुत स्पीड पर जो सेल की सोल्यूशन होती है, जो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म होता है, उसको हम बहुत हाई स्पीड पर स्पिन करते थे, जिसकी वजह से हमारे पास ऑर्गेन्यूल्स अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी और देयर एमआर सेपरेट हो जाते थे. Using that technique, intact mitochondria were isolated from cells. Now, once we isolated a mitochondria, हमने क्या किया, हमने उसकी outer mitochondrial membrane remove कर दी. So, a technique was used to remove the outer mitochondrial membrane, leaving the inner membrane intact. The inner mitochondrial membrane was separated from the contents of the matrix so that both could be analyzed. तो हम step by step separation कर रहे हैं. The first part asks us the removal of the outer membranes of mitochondria involves placing the organelles in pure water. Now, if you would remember, pure water has the highest water potential. This results in the rupture of the outer membrane. हमारी जो outer membrane है, it undergoes an osmotic lysis. The inner mitochondrial membrane does not rupture and remains intact when it is placed in the pure water. Suggest and explain why the inner membrane of a mitochondrion remains intact when the organelle is placed in pure water. इस इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चल रहा है कि आउटर मेम्ब्रेन osmotic lysis से affect हो रही है. It is undergoing an osmotic lysis. But the inner membrane is not undergoing an osmotic lysis. This suggests that if osmosis is not taking place across the inner membrane, this means that the inner membrane is impermeable to water. Water directly inner membrane के through move नहीं कर सकता. Is this now clear to all? So, the inner membrane is impermeable water, and thus water cannot directly move across the inner membrane via osmosis. Name three molecules other than coenzymes that are found in the mitochondrial matrix and explain their role in aerobic respiration. So, coenzymes क्या होती हैं? Coenzymes हमारे पास होती हैं NAD plus FAD and coenzyme A. इन तीनों के अलावा हमें बाकी मॉलिक्यूल्स जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती हैं, we need to name three of them and suggest their roles in aerobic respiration. So, can you guys list down what we can find in a mitochondrial matrix? क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं एक mitochondrial matrix में? Very good. We have pyruvate present. We have pyruvate. Pyruvate क्या करती है? It undergoes or it enters the link reaction and undergoes decarboxylation and dehydrogenation.
to form acetyl group. Okay, what else do we have in the chat? We have oxygen. ऑक्सीजन का रूल हमें पता है, इट एक्ट्स एज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. Miss, जी. Miss, but it says mitochondrial matrix, पर ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में होता है ना, क्रिस्टे में फाउंड होता है. हमारे पास, लेट्स से, ये मेरे पास अगर हमारा इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन पे ईटीसी है, राइट, दिस इज द ईटीसी, द ईटीसी इज ऑन द इनर मेम्ब्रेन. ऑक्सीजन जो है वो इस ईटीसी पर आ रहा है टू एक्सेप्ट द फाइनल इलेक्ट्रॉन, राइट. सो दिस ऑक्सीजन, ये ईटीसी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ईटीसी एक प्रोटीन है. द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट विद इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ये ऑक्सीजन आता है एट द फोर्थ protein complex, and it accepts the electron of the fourth protein complex. So the oxygen is present in the mitochondrial matrix. ठीक है मार? Yes, miss. Yeah, actually. And combines with protons to form water. Yes, ADP can also be counted. We can say ADP needs to be present in the mitochondrial matrix to undergo phosphorylation to form ATP. So ADP भी हम लिख सकते हैं. ADPs are present in the mitochondrial matrix to combine with inorganic phosphate to form ATP. बाकी भी मैं जल्दी से देख लेती हूँ चैट में आप लोगों ने क्या क्या सजेस्ट किया है. ऑक्सैलो एसीटेट, यस, ऑक्सैलो एसीटेट भी हम लिख सकते हैं, सिट्रेट भी लिख सकते हैं. अगर मैं साइड पे लिखती जाती हूँ इनको, ऑक्सैलो एसीटेट एंड सिट्रेट अगर हम लिखेंगे तो उनका रोल हम विद रिस्पेक्ट टू क्रेब्स साइकिल एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. Then what else is there in the chat? Yes, yes, you can say oxaloacetate accepts the acetyl CoA to form citrate. आप oxaloacetate का ही लिख सकते हो, आप citrate का ही लिख सकते हो. That citrate undergoes decarboxylation, and decarboxylation हमारे पास जब होती है और dehydrogenation जब citrate की होती है तो हमारे पास reduced NAD और reduced FAD बनते हैं. So you can talk about that. So oxaloacetate and citrate की भी हम बिल्कुल बात कर सकते हैं. अच्छा, अमार अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट होता है ना. Over here, they're talking about name three molecules and their role in aerobic respiration. Carbon dioxide is a product of aerobic respiration. It does not play a role in aerobic respiration. वो aerobic respiration के result में बनता है. So yes, carbon dioxide can be found in the mitochondrial matrix, but carbon dioxide is not playing a role in aerobic respiration. It is a byproduct of aerobic respiration. ठीक है. द सेंटेंस यानी आप वो पूछ रहे हो जो स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया था कि कैसे याद करना है फर्स्ट से लेके फोर स्टेप्स को. So that was glucose loves killing oxygen. So this stands for glycolysis. This is your link reaction. This is your Krebs cycle. This is your oxidative phosphorylation. Yeah, but they expect us to know that आपको पता हो कि ऑक्सीजन क्या रोल प्ले कर रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में. सो आई डोंट थिंक सो यू जस्ट गेट अ मार्क फॉर सेइंग दैट ऑक्सीजन प्लेज अ रोल इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. यू नीड टू एक्सप्लेन, बिकॉज यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेन देयर रोल. सो फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन you need to tell that it acts as a final electron acceptor. अगर वो पूछते state the process in which oxygen is being used in aerobic respiration, तब आप खाली oxidative phosphorylation लिखते. Because they're asking us to explain, that's why we are writing that it is acting as the final electron acceptor. ठीक है.
Now, the inner membrane contains a very high proportion of the molecule cardiolipin. Cardiolipin makes the membrane impermeable to some ions. Suggest why the inner membrane contains a very high proportion of cardiolipin. If you guys remember, बल्कि छोड़ो ये बताओ मुझे कि अगर मेरे पास ये इनर मेम्ब्रेन है एंड वी नो कि यहाँ पर ज्यादा प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, वी हैव अ हाई प्रोटॉन concentration in the intermembrane space, and we have a low proton concentration in the matrix. So क्या हमारे पास प्रोटॉन्स डायरेक्टली डिफ्यूज अक्रॉस कर सकते हैं अक्रॉस द क्रिस्टे अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन? इज दैट पॉसिबल? डायरेक्ट डिफ्यूजन हो सकती है? राइट। हमारे पास जो प्रोटॉन्स हैं दे आर नॉट सपोज टू डायरेक्टली डिफ्यूज or move via simple diffusion across the inner membrane, because हमारे पास it is important that when these protons move from the channel protein or through the channel protein which is present in the stalk particle, because ये जब प्रोटॉन्स मूव करते हैं तभी हमारे पास जो ADP है it gets phosphorylated at the ATP synthase. So this inner membrane has to be impermeable to protons. So this inner membrane is impermeable to protons. And therefore हमारे पास ज्यादा कार्डियोलिपिन होगा, because what's the role of cardiolipin? Cardiolipin makes the membrane impermeable to some ions. So just why the inner membrane contains a very high proportion of cardiolipin, we need to ensure that the inner membrane is impermeable to protons so that a proton gradient, an electrochemical gradient, is established. The inner membrane contains high proportion of cardiolipin. Ensure that the inner membrane is impermeable to protons so that a proton gradient is maintained. Yes, Amar, is there any question? Miss, then how does the proton move from the matrix to the intermembrane space if it is impermeable? Okay, हमारे पास जो ETC होता है ना, over here, जो ETCs होता है, इन ETCs के थ्रू हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा होता है और यहाँ पर एनर्जी जनरेट होती है, तो इन्हीं प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू हमारे हाइड्रोजन्स मूव कर रहे होते हैं. सो ईटीसी के जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वहीं पर एनर्जी जनरेट होती है टू अलाउ फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और उन्हीं प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू हमारे जो प्रोटॉन्स होता है ना दे आर मूविंग फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. ठीक है. नाउ इन फर्दर ओके आई रिपीट. हमारे पास ईटीसी जो है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस. ये सारे हमारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं. हमारे पास these protein complexes you can say are acting as carrier proteins for hydrogen. तो हमारे पास जब protons move करते हैं from the matrix to the intermembrane space, they are moving across or they are moving through these protein complexes. ठीक है. So these protein complexes you can say are acting as carrier proteins for the protons. ठीक है. This is not something your syllabus expects you to know कि protein complexes के across hydrogen ions move करता है. But just because you asked this question, that's why I'm telling you. This is not something that your syllabus expects you to know. ठीक है? To all of you. Any ambiguities about this? Perfect.
In further experiments, it was found that in an intact mitochondria, there is a membrane potential across the inner mitochondrial membrane, with the matrix having a negative charge. Now, हमारे पास हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बिकॉज ज्यादा प्रोटॉन्स हैं, सो दिस वुड हैव अ पॉजिटिव चार्ज and this would have a less negative charge. Less negative charge can also be synonymous to having a negative charge. तभी हमारे पास एक electric gradient, electrochemical gradient बन रहा होता है. So that is why there is a membrane potential over here in the intermembrane space. The transport of ATP, ADP, and inorganic phosphate is driven by the membrane potential across the inner membrane. Figure 3.1 shows the location of some inner membrane carrier proteins. So there are some carrier proteins that they have shown us over here. Now, इस information को देके there is a possibility that students might get worried कि membrane potential आ गया है. Membrane potential तो हमने action potential वाले topic में पढ़ा था and carrier proteins की तो हमने बात पढ़ी ही नहीं है. Now, when you come to the question which they're asking you, that has nothing to do with this information and it has everything to do with what you've studied in your theory. So reduced NAD and reduced FAD transfer hydrogen atoms to carriers located in the inner mitochondrial membrane. Explain how hydrogen atoms from reduced NAD and reduced FAD lead to a membrane potential forming across the inner mitochondrial membrane during oxidative phosphorylation. So, in very simple words, this question is asking you the role of reduced NAD and reduced FAD in oxidative phosphorylation. So, बहुत से questions में आप लोग देखोगे, AS में भी देखा होगा, A2 में भी देखा होगा, they give you some information, some additional information which you might have not explicitly studied in your syllabus. And जो question वो इससे relate करके पूछते हैं, वो आपके syllabus का ही होता है. So, ऐसी information से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है. Now, how does reduced NAD and reduced FAD lead to a membrane potential forming across the inner mitochondrial membrane during oxidative phosphorylation? सबसे पहले oxidation होगी हमारे पास NAD and FAD की. Reduced NAD and FAD get oxidized. NAD plus and FAD and hydrogen atoms. The hydrogen atoms split into high energy electrons and protons. The electrons move across the ETC and lose energy, which is used to actively pump protons into the intermembrane space. Proton gradient is established in the intermembrane space, resulting in chemiosmosis and phosphorylation of ADP. Any questions about this? Pretty straightforward. बिल्कुल theoretical question था आपकी theory से ही. Now, suggest and explain how inorganic phosphate is transported across the inner membrane of the mitochondrion into the matrix. Now, they're asking us, inner membrane से
मैट्रिक्स में जो फॉस्फेट मूव कर रहा है, हाउ इज दैट गेटिंग ट्रांसपोर्टेड? ना, हमारे पास ट्रांसपोर्ट के दो मैकेनिज्म्स होते हैं. दे कैन बी सिंपल डिफ्यूजन एंड इट कुड बी facilitated diffusion, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ना हमने बिल्कुल स्टार्ट में जब फॉस्फेट ग्रुप पढ़ा था, या आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी जो फॉस्फेट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फॉस्फेट इज व्हाट? Phosphate is PO4 3 minus. This is your inorganic phosphate. Phosphate is a negatively charged species, and a charged species cannot cross the membrane via simple diffusion. So definitely वो हमारे पास facility diffusion या active transport के through move कर रही होगी. For both these things, we need transport proteins. We need what do you say, channel proteins or carrier proteins. So we would say inorganic phosphate moves via channel protein or carrier proteins. अच्छा, another thing that you would observe कि हमारे पास over here, because उन्होंने हमें डायग्राम दी हुई है, हमारे पास जो फॉस्फेट मूव कर रहा है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो मूव कर रहा है, और प्रोटॉन्स जो मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग टुगेदर. कैन यू ऑल ऑब्जर्व दैट थ्रू दिस डायग्राम? एंड वी नो कि हमारे पास जब हाइड्रोजन आयंस मूव करते हैं फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स, that is when the inorganic phosphate is added to ADP to synthesize ATP. So always remember, हमारे पास जब facilitated diffusion हो रही होती है प्रोटॉन्स की, तो उसके साथ ही हमारे पास फॉस्फेट भी मूव कर रहा होता है to get attached to an ADP. So over here, because they have given you this diagram, they expect you to write this कि हमारे पास जब मूव करेगा inorganic phosphate, so it would be moving with the proton so that it can phosphorylate an ADP molecule. The inorganic phosphate moves with the proton and phosphorylates ADP to ATP. Suggest the advantages of linking ATP transport to ADP transport across the inner membrane of the mitochondrion. Now, they're asking us why the linked movement of ATP and ADP is important in the mitochondria. So अगर आप देखो, हमारे पास अगर ADP मूव हो रहा है, if ADP is going into the mitochondrial matrix, the ATP is moving out. So if the ADP goes in, the ATP comes out. Can you guys suggest what is the significance of this linked movement, of this linked transport of ADP and ATP? What is this advantage about? Yes, that is one part कि हमारे पास ADP जाना चाहिए to get phosphorylated, और ATP क्यों move कर रहा है? If ADP is getting in, why is the ATP moving out? Kind of yes, but let's say हमारे पास अगर ATP मूव आउट कर रहा है और ADP अंदर जा रहा है टू फॉर्म मोर ATP, कैन वी से दैट दिस इनेबल्स अ कांस्टेंट concentration gradient? हमारे पास अगर मुझे ADP को अंदर भेजना है, so ATP has to come out so that there is a constant concentration gradient. So the reason why ADP and ATP move together is to ensure that there is a constant concentration gradient maintained. And as Ahmed said in the chat box, that it also ensures that there is a constant supply of ADP to be phosphorylated.
So we need to talk about the constant concentration gradient. Concentration gradient होगा तभी तो movement होगी, right? If there is no concentration gradient, हमारे पास कोई भी movement नहीं होगी, कोई diffusion, कोई active transport नहीं होगा. For both of them to take place, there has to be a gradient first and foremost. So linking ATP transport to ADP transport ensures that a constant concentration gradient is maintained. There is a constant supply of ADP to be phosphorylated. Okay. Any questions about this question? All clear? Very good. Answer. Another question that I want to do with you guys is the respirometer wala. Acha, all the questions in this document are from paper 4. So ये completely paper 4 के topical है. Okay, मैं last वाला दिखा देती हूँ. एक second. ठीक है? Okay. Now, this respirometer question is one of the most recent questions. ये March 2024 का question है. This is also a paper 4 question. So, a respirometer is a piece of apparatus that can be used to measure the rate of respiration of living tissues, such as germinating peas. Simple respirometer is shown in figure 6.1. So, हमारे पास यहाँ से we are ensuring ये हमारे पास यहाँ से atmospheric air जा रही है अंदर. We have potassium hydroxide solution. We have our germinating seeds and ये जो wire है या gauze है वो separate कर रहा है in germinating peas को with the potassium from the potassium hydroxide solution. This is our colored liquid कि अगर हमारे पास कोई भी gas की movement होगी, for example if air is moving this way और हमारे पास क्या कहते हैं एयर प्रेशर चेंजेस की वजह से कोई भी अगर हमारे पास एयर की हमें मेजरमेंट लेनी होगी, सो हमारे पास लेट से जो लिक्विड है वो यहाँ से ड्रॉप कर जाएगा, यहाँ से इंक्रीज कर जाएगा, और जो भी हमारे पास वैल्यू ऑफ इंक्रीज होगी दैट डिस्टेंस वी वुड मल्टीप्लाई विद द एरिया ऑफ दिस कैपिलरी ट्यूब. नाउ, a student carried out an investigation to determine the effect of temperature on the rate of respiration of germinating seed. So हम basically देख रहे हैं how temperature affects the rate of respiration. The student set up the respirometer as shown in figure 6.1 and placed the respirometer in a water bath at 10 degrees Celsius. After 5 minutes, the student used the syringe to adjust the position of the colored liquid in the right hand side of the U-shaped tube so that it lined up with 0 centimeter on the ruler. The student immediately started a timer. Now, यहाँ पर वो क्या कह रहा है? मेरे पास जो ये सिरिंज है, इस सिरिंज से अगर ये सिरिंज का जो मेरा पिस्टन है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो क्या हो रहा है? इट कैन सक एयर. एंड वो एयर क्यों सक कर रहा है? वो एयर इसलिए सक कर रहा है ताकि हमारे पास ये जो चीजें हैं ना, ये जो कलर्ड लिक्विड है वो हमारे पास बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाए, वो बिल्कुल इक्वल हो दोनों एंड्स, एंड दिस इज एग्जैक्टली एट 0 सेंटीमीटर. तो इस सिरिंज के थ्रू आई एम बेसिकली इंश्योरिंग कि हमारे पास जो कलर्ड लिक्विड है वो परफेक्टली 0 पॉइंट पे हो, और जब 0 पॉइंट पे ये लिक्विड आ जाएगा दैट इज व्हेन हम स्टॉप वॉच से अपना रेट ऑफ रेस्पिरेशन कैलकुलेट करना शुरू करेंगे. बिकॉज अगर मेरे पास कलर्ड लिक्विड 0 पर नहीं है और इक्वल लेवल्स पर नहीं है तो मेरे पास फिर हम रीडिंग नहीं ले पाएंगे एक्यूरेटली. सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट हम सबसे पहले इसको इक्वल लेवल पर और 0 के लेवल पर ले आए.
The germinating piece used up oxygen, causing the colored liquid in the U-shaped tube to move. The student measured the distance moved by the colored liquid after 20 minutes. The student repeated the experiment at temperatures of 20 degrees Celsius, 30 degrees Celsius, 40 and 50 degrees Celsius. State the function of the potassium hydroxide solution used in the investigation. What would an alkaline solution do in this case? Perfect. It absorbs carbon dioxide. Suggest how the validity of the results could be assessed. अच्छा, हम जब वैलिडिटी की बात करते हैं ना, वैलिडिटी का मतलब होता है how authentic is the experiment. और अगर हमें ऑथेंटिसिटी एक एक्सपेरिमेंट की चेक करनी है, तो उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए हमारे पास एक तो सबसे पहले रिपीटेबिलिटी कितनी है. Now, what do I mean by repeatability? अगर मैं experiment बार बार कर रही हूँ, exactly. If we're doing the experiments again and again and we're getting almost the same values, we observe the same trend. If the results are consistent at every repetitive experiment, that means my results, my experiment is valid. So एक तो repeat करके. दूसरा, by setting up a control experiment. इसके साथ इसके अगेंस्ट हम एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट इंट्रोड्यूस कर दें. कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, हाउ वुड अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट confirm the validity of my results? What do you think? एक रिपीट करने से समझ आ गया कि बार बार रिपीट करेंगे और कंसिस्टेंट वैल्यूज मिल रही हैं, तो इसका मतलब है हमारे रिजल्ट्स वैलिड है. बट मैं कंट्रोल सेटअप अगर इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, तो उस कंट्रोल सेटअप से मेरे रिजल्ट की वैलिडिटी किस तरह से इफेक्ट होगी? एनी सजेशंस? ओके, यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. मेरा क्वेश्चन समझ नहीं आया या पेपर का क्वेश्चन समझ नहीं आया? वेरी गुड मिशाल, दैट्स द आंसर. अच्छा जी, हमारे पास जल्दी से मैं एक क्विक साइंस टिप दे देती हूँ. हमारे पास हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. दो चीजें होती हैं, आईवी एंड डीवी. हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, राइट? ना, हमारे पास जब हम कंट्रोल वेरिएबल या कंट्रोल सेटअप जो हमारे पास होता है, उसमें हम क्या करते हैं? देयर इज नो independent variable in that. A control setup does not have an independent variable. And by having a control setup which does not have an independent variable, हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आएगा, राइट? एक कंट्रोल सेटअप में फॉर एग्जांपल मैं ग्लास बीड्स डाल दूं या मैं कोई नॉन रिस्पायरिंग स्पीशी डाल दूं, तो क्या मेरे पास कोई रिजल्ट आएगा रेट ऑफ रेस्पिरेशन का? या टेम्परेचर चेंज करने से मेरे रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? व्हाट डू यू गाइस थिंक? No, right? So a control setup does not have an IV. The independent variable is not present in the control setup. This control setup would confirm your hypothesis that the independent variable, the respiring organism, is what causing the changes in the dependent variable. So हम जब एक IV introduce, sorry, जब हम एक control setup introduce करते हैं, एक control experiment introduce करते हैं जिसमें कोई independent variable नहीं होता, हमारे पास कोई change नहीं आता. और जब हमारे पास चेंज नहीं आता, ये हमारे हाइपोथेसिस को, हमारे एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन को कंफर्म कर देता है कि जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज कॉजिंग द चेंज. एंड इफ दैट इज प्रूव्ड, इट मींस आवर रिजल्ट्स आर वैलिड. इज दिस नाउ क्लियर? आई थिंक सो राहिमा और आमना को कंफ्यूजन थी कंट्रोल सेटअप वाली बात में. सो अ कंट्रोल सेटअप वुड कंफर्म दैट योर आईवी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट्स दैट यू आर गेटिंग. ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम P5 पॉइंट ऑफ व्यू. और आगे अगर साइंस कंटिन्यू करनी है और रिसर्च एक्सपेरिमेंट करना है, सो आईवी डीवी सीवी चलता ही रहेगा. सो a control setup would never have your independent variable, which would confirm that your result CV is your control variable. ठीक है? ओके, सो सबसे पहले तो हम अपना एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे. रिपीट द एक्सपेरिमेंट
ensure that the results are consistent, introduce a control setup to confirm that the change in results or even the results are because of the independent. अच्छा यहाँ पर in this case you can say are because of the germinating seeds. या फिर अगर कंट्रोल सेटअप को एक्सप्लेन भी करना चाहो वो भी कर सकते हो दैट create a similar respirometer, set up a similar respirometer with glass beads as the control setup. ये भी आप alternatively लिख सकते हो. No, no, it is not necessary to give an example. आप खाली ये भी लिख सकते हो that introduce a control setup to confirm the authenticity of your independent variable. या फिर अगर आप एग्जाम्पल में एक्सपेरिमेंट कंट्रोल सेटअप का डिफाइन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो. बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स वुड गेट यू योर मार्क्स. ठीक है, सबको क्लियर हो गया कि रिपीट करने से और कंट्रोल इंट्रोड्यूस कराने से हमारे जो वैलिडिटी और ऑथेंटिसिटी होती है एक्सपेरिमेंट की वो प्रूव हो जाती है. वेरी गुड. Explain why the respirometer was left in the water bath for 5 minutes before starting the experiment. ये हमने कल भी डिस्कस किया था acclimatization के लिए, या you can say for the temperature of the respirometer to be equal to the water bath. The rate of movement of the colored liquid in the U-shaped tube calculated from the results is shown in table 6.1. So we have the table, her temperature के equivalent कितना move किया हमारा colored liquid, they've given us that. Plot a graph of the results shown in table 6.1 on the grid in figure 6.2. Draw a curved line of test fit. हमारे पास ये points हैं जिनको हम plot कर देंगे. So at 10 we have 0.4. At 20 we have 0.7. At 30 it is 1.3. And at 40 we have 1.15, which would be somewhere here in the middle. And at 50 we have 0.6. And then आप अपना curve of best fit draw कर दोगे. It should be passing all your points. सही है. Now, the rate of movement of the colored liquid is related, yeah, literally free marks. मैं ATP वाले बच्चों को भी और P5 में भी अगर ग्राफ का क्वेश्चन आता है, I always say, इसमें तो खैर 2 marks का वो है ग्राफ, but in ADPs and in your paper 5 to 6 marks के free marks वो दे रहे होते हैं. Try to secure them all in all. The rate of movement of the colored liquid is related to the rate of respiration. Explain the effect of temperature on the rate of respiration shown in table 6.1 and figure 6.2. Yes. हमारे पास क्या हो रहा है? As the temperature increases, the rate of movement or the rate of respiration increases. However, at temperatures beyond the optimum temperature, हमारे पास एक dip आ रहा है in the rate of movement, in the rate of respiration. We need to explain this, explain the effect of temperature. So we would say, as temperature increases, the kinetic energy increases, causing more or resulting in more frequencies of effective collision.
जिसकी वजह से we would have more ES complexes. However, at temperatures beyond optimum, the enzymes get denatured, due to which less ES complexes are formed. Is this clear? Any questions about this? So, respirometer के इतने difficult questions नहीं आते. टेम्परेचर के रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स आते हैं या फिर सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट से एक्सपेरिमेंट आ जाएगा कि सबस्ट्रेट वो मैनिपुलेट कर रहे होंगे एंड यू हैव टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू दैट. वैलिडिटी की हमने डिस्कशन कर ली है. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन वील कॉल इट अ डे. लेट मी सी क्या करें. लेट्स डू दिस. ओके. Glycolysis is a biochemical pathway that occurs in the cytoplasm of cells. In glycolysis, a molecule of glucose is metabolized to two molecules of pyruvate. The process is outlined in figure 1.1. So, this is the entire process of glycolysis. Explain why glucose is phosphorylated at the beginning of glycolysis. क्यों हम glucose को phosphorylate करते हैं? Right, to make it unstable. Very good. You can try to make it unstable and you can also say to make it more reactive. Both are acceptable. Suggest one use of the reduced NAD that is produced in glycolysis. हमारे पास NAD का क्या use होता है? Where does a reduced NAD help us or come into function? Right, it's a hydrogen carrier, or you can say the hydrogens that are carried by this reduced NAD are used for oxidative phosphorylation. Both of the points are absolutely correct. So we can say it is a proton carrier, carries protons and electrons for oxidative phosphorylation. Yes, you can also write it's a coenzyme. But if you're writing it's a coenzyme, then do mention that it's the coenzyme for dehydrogenases. Name the type of phosphorylation reaction by which ATP is made during glycolysis. So, हमारे पास this would be, yes, substrate length, substrate level. So, substrate linked phosphorylation, you can also call this substrate level phosphorylation. That is also acceptable. Pyruvate can enter the mitochondrion by active transport. Describe the main conditions that are required for pyruvate to enter the mitochondrion by active transport. Now, we haven't explicitly studied that pyruvate enters a mitochondrion by active transport. वैसे तो I think so मैंने ये mention किया था जब हम कर रहे थे, but ये इतना frequently tested concept नहीं है. Over here, they have told you, and वैसे भी I think so even in the notes and the lecture, I mentioned that pyruvate enters by active transport in the mitochondria. Now, even if we do not remember that pyruvate enters a mitochondria via active transport, हमें active transport के बारे में पता है. We know what are the requirements for active transport. Now, describe the main conditions that are required for pyruvate to enter the mitochondrion by active transport. अगर हमारे पास across a membrane active transport होना होता है, सबसे इम्पोर्टेंटली हमें क्या चाहिए? हमें कैरियर पंप्स चाहिए या कैरियर प्रोटीन्स चाहिए. सो एक कंडीशन क्या होगी? कैरियर पंप्स. यस.
वी ऑल्सो रिक्वायर एटीपी, एटीपी चाहिए। अच्छा, अगर हमें एटीपी चाहिए, and because we know that pyruvate can only enter the mitochondria when aerobic respiration is taking place. Very good, Ahmed. I was getting there. हमारे पास पायरुवेट का एंट्री इन माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। एटीपी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से बनना जरूरी है। सो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी फॉर aerobic respiration. Any questions? Not really. I don't think so. Partially permeable membrane would be an acceptable marking point. I'll still try, but I don't think so that this would get you a mark. Yeah, partially permeable membrane, I don't think so is a requirement for active transport. अच्छा, we still have 10 minutes. So I'm being so nice. मैं आप लोगों का assignment का काम कम कर रही हूँ. Let's see which one we can use. We can do again. अच्छा, ये वाला question कर लेता हूँ. Miss, can you please show पिछला वाला एक बार? Okay, एक second. मैं दिखा देती हूँ. This one? Yes. Miss, can you explain the last point, please? Oxygen availability वाला? Yeah, why is it like necessary for it? For like, and then we're specifying aerobic respiration within समझाइए. हमारे पास पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में कब एंटर करता है? जब लिंक रिएक्शन हो रहा होता है, क्रेब्स साइकिल हो रही होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रही होती है, तभी एंटर करता है। अदरवाइज वो कहाँ पे एंटर कर जाता है? लैक्टेट फर्मेंटेशन साइकिल में एंटर करता है, राइट? So pyruvate only Okay, enters got the it now. mitochondria when aerobic respiration is taking place. And for aerobic respiration to take place, the oxygen has to be present. Okay, that is why. Thank you. The first question. Respiration is a process that results in the synthesis of ATP. The ATP can be used within the cell for energy requiring reactions and processes. Now, there are four stages in aerobic respiration: glycolysis, link reaction, the Krebs cycle, and oxidative phosphorylation. The ATP synthesized in respiration can be used to make larger and more complex biological molecules from smaller molecules. Name the type of reaction that occurs when larger, more complex biological molecules are made from smaller molecules. So this is no, not catabolic. This is anabolic. Catabolic में तो हमारे पास breakdown हो रहा होता है ना? Catabolic is breakdown. Hydrolysis is catabolic. Anabolic is when we're making larger, more complex biological molecules. So यहाँ पर हम anabolic लिखेंगे, or we can say condensation reaction, and we can also call this polymerization. All these three are acceptable. The first part of glycolysis uses ATP. Explain why ATP is needed in the first part of glycolysis. So we know ATP is needed to phosphorylate the glucose molecule. And why do we need to phosphorylate? So that glucose becomes unstable or reactive. State the precise locations of substrate linked phosphorylation reactions in aerobic respiration. हमारे पास substrate linked phosphorylation कौन कौन से steps में हो रही होती है? Glycolysis में हो रही होती है और Krebs cycle में हो रही होती है. Now glycolysis takes place in the cytoplasm.
And Krebs cycle takes place in the mitochondrial matrix. Explain what happens to pyruvate in the link reaction in aerobic respiration. So हमारे पास in the link reaction pyruvate undergoes decarboxylation to form acetyl group, and it also undergoes dehydrogenation to reduce NAD. Okay, what's going on in the chat box? Yeah, actually, I think so. Somebody asked if partially permeable membrane would cause active transport. So I said that that would not get you a mark because partially permeable membrane is not a requirement for active transport. Yes, you're right, Ahmed. Yep, it should be impermeable. Acha. So that's it for today. Any questions about this question? Everything's clear? I'll share this solved sheet with you guys as well. तो जो questions हमने नहीं किए, those questions are your homework. Sorry, Ahmed, what was the question? It slipped my mind. Can you repeat? Was it the anaerobic respiration wala? Somebody asked me that question. Yeah, right. अच्छा, so you don't need to go into the detail of it because अगर वो आपसे aerobic and aerobic respiration की RQ value calculate करवाएंगे ना, they would give you the volumes or the mole of oxygen and carbon dioxide. तो एक तो आप खुद calculate करोगे from the data that they have provided. Otherwise, अगर हम theoretically इसको समझना चाहें, so we said that हमारे पास carbon dioxide, let's say 6 moles of CO2 है, and we have 0 moles of oxygen. This gives us what? This gives us infinity, right? Now, infinity हमारे पास would be any value that can be greater than 1. तो infinity को हम ये नहीं कह सकते कि infinity would be less than 1. But we know कि aerobic respiration की value 1 से ज़्यादा नहीं आ सकती क्योंकि फैट्स की क्या है, फैट्स की 0.7 है, प्रोटीन्स की 0.9 है, ग्लूकोज की 1 है. सो इन तीनों के हमने एरोबिक रेस्पिरेशन की वैल्यूज फिगर आउट की हुई है एंड वी नो दैट 1 is the maximum value we get for aerobic respiration of all the respiratory substrates. तो अगर हमारे पास 1 से less है, it has to be aerobic. And if it is greater than 1, now greater than 1 cannot be aerobic. So if we are getting a value of RQ that is greater than 1, then that lies in the range of infinity, right? 1 से infinity तक के बीच में हमारे पास कोई भी value आएगी, that value would be anaerobic. Now, is this logic clear? It's like more like a number system or like a spectrum. So 1 से infinity के बीच में जितने भी numbers आते हैं, अगर उनमें से कोई RQ value है, it would be anaerobic. And yeah, 1.01 भी अगर है, 1.05 भी है. But yeah, इतनी technicalities में RQ का question पूछा नहीं जाता. ठीक है? इस document में there is one question that I have added of RQ to test your concept of that. So इतने मुश्किल आता नहीं, वो भी बहुत logical और mathematical question. It's not very hard. So don't worry about that. I would share this solved copy with you guys and the rest of the questions.